of risk in our hands, so that we can make assessment and try to follow the strategies that helps us to mitigate the risks which are inherent in this type of trade or any kind of trade. Third thing I would like to present to you a glimpse of it is ultimately why do we do business? Business is nothing but my selling a product to somebody. जैसे आप प्रोफेसर साहब ने बोल रहा था, है क्या नहीं? किस लिए हम बेचेंगे? First of all, I must get the payment. Then हम हिसाब करेंगे प्रॉफिट होता है कि नहीं का. अगर प्रॉफिट नहीं भी होता है तो मेरा जो आशा है वो भी वापस आ गया तो बस कम से कम वो तो ठीक है. लेकिन when I sell something, I must get the money back. What are the different types and procedures, the methods that I can get the money? ऐसा नहीं है हम बोल देंगे हम ये बेच देते हैं तो पैसा दे दें. So international trade में, exports में क्या क्या होता है? What are the different methods? उसमें आपको क्या करना है एक्सपोर्ट? That we will. And last, maybe time will not permit. I will just business में पैसा चाहिए. If I have a rich father-in-law or mother-in-law, I can. But everybody will not be lucky. I need money. Where do I get the money? Now, bank is one of the sources that I get money. I can't depend upon a lot of lottery and then start a business like that. So we will talk a bit about, I will take a full session on export credit or export finance, because that is one area very frequently, and it is true being a banker also I have experience that first of all हम छोटा बिजनेसमैन है, हम बैंक में जाने के लिए डर लगता है. बैंक जब घुसेंगे तो पियोन से शुरू करके मैनेजर तक पहुंचने के लिए तो हमारे एकदम एक महीना चला जाता है. एवरीबॉडी इज वेरी बिजी. दिन इतना खर्चे देंगे कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, वो करते करते मेरा तो एकदम काम खत्म हो गया. I will just try to give you some idea कि what are the government provisions and what you should actually do. For a kind information, the other day I was telling to Mr. Pulata, here in this class, last time when I was taking, after that 2-3 बजे, sorry, hello? You can write all important points which you would like to ask me. Not that everything you have to copy. That support will be given to you. Don't worry. Export documentation, export finance, pre-shipment and post-shipment, and also in rupee and foreign currency. Risk. What is the concept of risk and its relevance with export trade? Then how do you manage the risk in foreign exchange? One of those instruments are the hedging tools. Then one of the most important method of international trade settlement is the LC mechanism. तो क्या चीज होता है? LC सब बोलते हैं, वो क्या चीज होता है? दिल्ली का लड्डू है या some fish है? We will just see what is it, right? And if time permits and if they permit, in case you feel like that, since I have spoken about export trade, it is not necessary all of you will be engaged in export trade. Many of you may start with domestic trade. Many of you may not be in a position to go for exports. Even you can do domestic trade also. For that, if you need the bank finance, what is the support available in our country? What is the support available in our system? And what you should do? Because a lot of trust is given, crores and hundreds of crores of rupees are being spent by the government to promote this MSME sector. And उसका फायदा अगर हम छोटा बिजनेसमैन होकर नहीं ले पाएंगे. Foreign exchange क्या है? Foreign exchange क्या होता है? Every country has got a currency. You are in India. What is the currency you use? Indian rupees. You sell it to some other country. You get money either in Indian rupees or in some other currency. Currency or money of other country, then your home country. Required. Why you need it? Required for settlement against purchase of goods or services by one country from another. Every country requires easily convertible foreign currency funds for cross-border trade, as none is self-sufficient in affairs. अगर हमको oil चाहिए, तो उनको output चाहिए, is it not? That is exactly why the trade between the different countries are settled in foreign exchange. It is one type of barter trade, not barter. No, that's why I say it is barter. होगा तो 1-to-1 होगा. It's not barter. हेमा
FEMA? Anybody can tell? RBI regulations नहीं, मैं बता रहा हूँ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हम आएंगे. इज वन ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज जो एक्सचेंज कंट्रोल का सबसे बड़ा बॉस है. एक रूल है, उनको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको बोलता है फेमा. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट खाली नाम खाली आप याद रखिए कि फेमा, क्योंकि जितना सारा एक्सपोर्ट्स का प्रोविजन होगा या इंपोर्ट्स का प्रोविजन होगा, दैट इज कवर्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज कॉल्ड फेमा. इट इज ए स्टैट्यूटरी रूल. एक खाली नाम थोड़ा याद रखें, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी भूल जाइए सब. बाकी हम जो लिखा भूल जाइए. जब हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं तो क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज से मार्केट होता है. छोटा सा करके आइडिया देता हूँ. क्या मार्केट होता है? ये कोई चांदनी चौक नहीं है या शियालदा नहीं है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एग्जिस्टेंस है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 24 आवर से ऑपरेट करता है. बंद करिए ना. Different players, and maybe for one transaction also many of them they are involved. So what is the difference between hedgers and speculators? Yeah? Hedgers And speculators. Speculator is only for they will speculate. Hedgers is you have got an exposure which you like to hedge and cover the risk. So what is the meaning of hedge? hedge means Hedging is nothing but it is an instrument. मान लीजिए आपने एक ऑर्डर मिला है $10,000 का, आज का रेट है 65 रुपीज, तो आपका $10,000 का 65 रुपीज में आप गिनती करेंगे तो 6,50,000 हो गया. ठीक है. अभी आपने एक महीना बाद में उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसी टाइम में अगर डॉलर का रेट 60 रुपया हो गया तो आपको कितना मिलेगा? 6 लाख मिलेगा. 50,000 रुपया कहां से जाएगा? आपका अकाउंट से. लेकिन कुछ हेजिंग मेथड है जिसमें आज आप जो 65 रुपया में खरीदे हैं वो 65 रुपया का रेट में आज आहार कर सकते हैं, एक महीने का बाद आपको वही रेट मिलेगा. दैट्स इज कॉल्ड हेजिंग. the time limitation is there. उसका बहुत सारा है, वो तो हम बताएंगे. हम खाली कांसेप्ट हम देते हैं. It is done through time. या ठीक है. उतना तो हम नहीं जाएंगे. ये जो फॉरेक्स एक्सपोर्ट, Foreign exchange. only. I'm happy that you have asked about this, but तो ठीक है. foreign exchange नहीं अच्छा है कि नहीं? And the seller performs. Contract between buyer and seller क्या होता है? Buyer wants to buy certain products. A surgeon, my friend, he is selling some agricultural product. तो उसको बांग्लादेश से कोई ऑर्डर देंगे कि भाई साहब मुझे ए माल चाहिए, and there will be a sale contract. This is the unit, this is unit price, this is the total amount, shipment date is this, blah 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 blah. वो सब आएगा. वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसे होता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसको इनको टर्म्स क्या होते हैं हम बाद में बताएंगे, तो बोलते हैं इंटरनेशनल कॉमर्स करना. These are all not required at the elementary level. Let us just understand कि you should have a contract between the buyer and seller covering some important points. Then ultimately the seller has to perform. क्या perform करना है? उसको माल बेचना है. And the buyer has to pay. So there are three basic things. एक, contract of sale. Second, execution by the seller. Third, payment by the buyer. Am I clear? Yes. This is required. So आप कुछ भी बिजनेस कीजिए, ये अगर नहीं होगा तो आप डोमेस्टिक कीजिए या एक्सपोर्ट कीजिए, the objective will not be served. Is there anything, any risk? Risk of non-payment, risk of material. कोई भी बिजनेस में रिस्क है, डोमेस्टिक भी है और वो भी है. लेकिन रिस्क क्या होता है? Risk involves anything that affects the performance of contract and receipt of payment. है कि नहीं? सीधी सी बात है. रिस्क माने কি হচ্ছে যে সেলার পারফর্ম করতে পারলো না, বায়ার পেমেন্ট করতে পারলো না, বেসিক্যালি এটা তো দ্যাটস দ্য রিস্ক. ওকে, বাট It's a buyer and seller. एवरी कंट्री हैज गॉट रूल. इंडिया में आप कोई चीज आप बेचेंगे, अमेरिका में आप ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट आप बेचेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचेंगे, एवरी कंट्री हैज गॉट सम रूल. What you are exporting is an import in that country.
अगर आप एक्सपोर्ट आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका एक रेगुलेशन है बीजीएफटी का, क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, किसमें कितना ड्यूटी होता है, बहुत सारी चीज है, क्या इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली देयर आर वो कंट्री का रूल्स रेगुलेशन जहां पर एक्सपोर्ट करेंगे वो थोड़ा जानना, इट इज नेसेसरी फॉर यू टू हैव सम आइडिया एंड रिसर्च अबाउट दैट कंट्री। लाइक आई विल गो टू वन एग्जांपल। इफ यू एक्सपोर्ट टू मिडिल ईस्ट, then you cannot use a vessel, एक जहाज यूज नहीं करते पाएंगे जहां पर इजराइल फ्लैग है। इट इज इनबिल्ट इन देयर ऑर्डर। नंबर 2, आप मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट आपने किया है, पैसा नहीं दिया है, यू हैव गॉट अ राइट टू कॉल बैक, वापस दे दो मेरा माल। There are some countries where, in case you do not get the goods back within a stipulated period, they will just throw it into the sea. Particularly if it is perishable. आप चिंगड़ी माछ भेजा है, तो चिंगड़ी माछ FDA ने ये नहीं किया है, मतलब पास नहीं किया है। I am just giving an example, whatever is there. So that is one. Second, the political situation of that country is very important. Sometimes पुरमान हो गया तो आपका payment late हो सकता है। These are all some of the you must know. कोई सारे restriction हो गया है, कोई वॉर हो गया है, कोई ट्रेड बैरियर हो गया है। बायर्स क्या होता है? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ ऑफ एन एक्सपोर्टर इज नॉट इज वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स और एनीबॉडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द लाइफ ऑफ द एक्सपोर्टर इज द बायर और द इंपोर्टर। आई रिपीट इट, say this and I mean it. If the buyer is good, if the buyer is honest, if the buyer's integrity is without question, no problem. But अगर buyer problematic है, तो आपको बहुत सारा सेटलमेंट देखना पड़ेगा. I mean that is the thing. That is why you should understand what it is, and even identifying them as the cover. How to select the buyer? You must be careful in identifying the buyer, and you must be careful when you enter into a contract. What are the terms that you should put there to safeguard your interest? हम आएंगे बात करते हैं तो बहुत सारा है एंड एक प्रोडक्ट बहुत सारे मतलब आप बना सकते हैं। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल लाइक दैट, मान लीजिए आपने कोई गारमेंट बनाया है, कोई शर्ट बनाया है, तो आपने इटाली में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इटाली में उस साइड में उस ईयर में वो गर्मी उतना नहीं पड़ा है, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना? सेकेंड, सपोजिंग यू आर एक्सपोर्टिंग सम फ्लावर्स, ठीक है ना, उसका एक लाइफ होता है, तो कितना दिन का बाद खराब हो जाएगा। What I'm just trying to say, you have something in your mind, make an assessment, because there are certain pricing में, आप मान लीजिए शिपमेंट में डिले कर दिया आपने हैंडीक्राफ्ट भेजेंगे लंदन में, आपका एक बायर है, वो दिसंबर में जो होता है ना, दिसंबर में या मिडिल ईस्ट में आप भेजेंगे, ईद का टाइम है, तो उसका 2 महीना पहले शिपमेंट पहुंच जाना चाहिए। आपका यहाँ पर बांग्लादेश, भारत ये सब करके आपका शिपमेंट डिले हो गया है, वो क्या करेंगे? उनको तो 3 महीना 4 महीना पहले चाहिए। सो इफ यू डिले द शिपमेंट यू आर caught in the risk. फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट एज आई हैव टोल्ड कि देयर इज एन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। आप जब कोट किए हैं, when you have quoted a price to your buyer, you have taken a rate, क्योंकि अगर 65 रुपया का आप बोलेंगे कि हम 60 रुपया लेकर हम कोट करेंगे, वो बायर का एजेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी मानेगा नहीं, ठीक है ना? So there is a risk of exchange rate fluctuation, but there is a way to cover it up. घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा।